गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम गति शक्ति। तो अभी हमने अक्टूबर के मिड में ही देखा था कि पीएम गति शक्ति प्लान जो है वो पीएम मोदी ने अनाउंस किया था। अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने इस प्लान को एक तरह से अप्रूव तो किया ही है और इसको पूरा फ्रेमवर्क भी दे दिया है। तो ये प्लान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं पहले। तो ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। आपको याद होगा कि हमने 13th को तो ये अनाउंस किया था, हमने 14th अक्टूबर की वीडियो में इसको डिस्कस किया था। और ये प्लान जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अगले 4 साल में गवर्नमेंट बनाने का प्लान कर रही है उसके बारे में ये हमारा पूरा ये प्रोग्राम है पीएम गति शक्ति। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम हो जाएंगी, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी तरह से बढ़ जाएंगी क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। और पोर्ट्स पे हमारी जो है आपके जो कमोडिटीज़ आती हैं, जो आपके कंटेनर्स आते हैं, तो उनको या जो शिप्स आती हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है वो इतनी जल्दी जो है उनका टर्न अराउंड टाइम वो है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पूरी कंट्री में बनाने की बात की जा रही है। 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स भी प्लान किए गए हैं, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। 4G कनेक्टिविटी सारे विलेजेस में देनी है। 17,000 किलोमीटर्स की गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी प्लान किया जा रहा है इसके अंदर। फिर गवर्नमेंट का प्लान है कि 2024-25 तक जो है हम नेशनल हाईवेज 2 लाख किलोमीटर जो है उसकी और लेंथ बढ़ाएं और 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है। तो ये इतना एम्बिशियस प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 110 लाख करोड़ का इसके अंदर खर्चा जो है वो प्लान किया गया है। सेंट्रल स्टेट लेवल पर, सबके लेवल पर प्लान किया गया है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का भी जो है इसमें पैसा लगेगा। तो ये 110 लाख करोड़ जो है इसके अंदर जो है वो सेंटर, स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर सबका पैसा इसमें बजट में जाएगा। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, इस प्लान को चलाने के लिए कैसे मैनेजमेंट को की चलेगी, कैसे ओवरसी किया जाएगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, उसका भी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। तो 3 लेवल पर इसकी जो है वो आपकी मॉनिटरिंग चलेगी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी देखी जाएगी। पहला तो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। दूसरा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप्स। ठीक है। तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप्स में जो है वो आपके जो नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन है अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में बनाए जाएंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, वो स्टेट लेवल से भी कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वो आप जो है नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और में डिपार्टमेंट्स होंगे आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है। फिर एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बनाया जा रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक लॉजिस्टिक डिवीजन होता है, उसके अंदर ये होगा। और ये जो है आपका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन पूरे जो है जितनी भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को। ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है कि हम सारा जो है इस पीएम गति शक्ति के थ्रू जो है हम अपनी गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें ताकि हम गुड गवर्नेंस लोगों को दे सकें। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, पीएम गति शक्ति. So on 14th October's video, we discussed this PM Gati Shakti plan because the Prime Minister announced this ambitious plan of a multi-modal connectivity, that is this PM Gati Shakti, and now the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved this particular plan, and they have also provided the institutional framework which will be implementing this ambitious scheme in the entire country. Okay, so apart from the central government, the state governments are also involved, and the money will also be flown from the private sector. So these three, the center, the states, as well as the private sector will partner with each other to implement this 110 lakh crore rupees plan to develop ambitious infrastructure in the country. So this has an integrated planning and implementation model of infrastructure projects for the next 4 years. So once these plan fructifies, we would be able to cut our logistics costs because we would be having a world-class infrastructure. It will also increase cargo handling of ships, and it will also reduce the turnaround times time at ports, and it will of course in turn boost trade. Okay, so in this particular program there are 11 industrial corridors which have been planned, and 2 new defense corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh have also been planned in this program.
4G connectivity to all villages is also an aim. 17,000 kilometers of gas pipeline network is being planned. There is also a plan to expand the national highway network to 2 lakh kilometers, and 200 new airports, heliports, and water aerodromes are also being planned under this PM Gati Shakti. Okay, so there is also an implementation framework which will be overseeing and implementing this entire plan along with the state governments. Okay, so there are 3 units which will be coordinating with each other. The first one, at the top, is an empowered group of secretaries which will be headed by the cabinet secretary, and there will be another network planning group which will consist of all the planning divisions under various ministries and departments, which will coordinate with each other as well as the state governments, because they will be having such planning divisions also, and this will facilitate coordination both vertical as well as horizontal. And the most important part of this framework is technical support unit. So it will be providing technical assistance in facilitating this coordination. So it will be located at the logistics division of the Ministry of Commerce and Industry. So if this plan fructifies, we will be able to provide good governance to the people of India, to the manufacturers, and to the farmers of India in particular. Okay, so नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोंकण शक्ति. तो यूके और इंडिया ने अपनी सबसे पहली ट्राई सर्विस जो है वो एक्सरसाइज जो है वो भी कंडक्ट करने लगे हैं. वेस्टर्न इंडियन ओशन वाटर्स में होगा. तो इसके अंदर ट्राई सर्विस क्या होगा, मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों कंट्रीज़ के. तो सबसे पहली ये एक्सरसाइज होगी. तो आपको इसका बैकग्राउंड जानने की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि अभी तक ये सबसे पहली ही है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये कब शुरू हुई थी या इसके कितने एडिशंस हो चुके हैं. तो ये सबसे पहली कंडक्ट की जा रही है. वेस्टर्न इंडियन ओशंस में, इंडियन ओशन वाटर्स में ये कंडक्ट की जाएगी और इंडिया और यूके के बीच में होगी. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. कोंकण शक्ति. सो दिस is the first joint tri-service exercise which will be conducted between the between the tri-services of both India and UK. So tri-services, you know already, Air Force, Army and Navy, both countries tri-services will be coordinating with each other in this particular exercise, and this will be conducted in the Western Indian Ocean waters. So now let us see the next topic which is e-prisons. तो होम मिनिस्ट्री ने अभी सारी स्टेट्स को एडवाइस किया है कि आप जितने भी प्रिजनर्स की आपने फ़ोटो डाली है जो ई प्रिजन्स नाम के आपके प्लेटफॉर्म पर, उसको जो है वो रीसेंट फ़ोटोज़ आप अपडेट करो उन पे सारे प्रिजनर्स की. और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी जो है वो आप सारा डेटाबेस जो है वो न्यू अपडेट करो. जो भी प्रिजनर्स जो कि पेरोल पर, फरलो पर या प्री मेच्योर रिलीज में जो जिनको छोड़ा गया है, ठीक है, तो उन सब की फ़ोटोज़ डालने को जो है वो स्टेट्स को बोला है. ठीक है. तो ये एक ई प्रिजन्स प्रोग्राम है क्या? ये कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम है. सारी कंट्री के जितने भी प्रिजन्स हैं उनकी कंप्यूटराइजेशन करने का एक ये प्रोग्राम है, और इसमें सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं. ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है. तो ये अब पुलिस को और कोर्ट सिस्टम को जो है आपका ई प्रिजन्स का डेटा है, ये आपके पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर जो है एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है. ठीक है. तो मतलब जो अम्ब्रेला आपका प्लेटफॉर्म है वो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इसके अंदर अलग अलग तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ई प्रिजन्स एक नेटवर्क अलग है, फिर पुलिस के लिए अलग से एक नेटवर्क होता है कि पुलिस का डेटा जो है अलग से इकट्ठा किया जाता है, फिर कोर्ट का डेटा इकट्ठा अलग से किया जाता है. उन सबको अम्ब्रेला डेटा जो सारा कलेक्टिव डेटा है वो सारा आपके इस अम्ब्रेला इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर डाला जाता है. ठीक है. तो अब जो ई प्रिजन्स को बढ़ाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 100 करोड़ रुपीज़ की जो है वो असिस्टेंस जो है वो स्टेट्स और यूटीज़ को ऑलरेडी दे चुके हैं, और ये बन चुका है, ऑपरेशनलाइज भी हो चुका है. और इसमें जो है डेटा कौन जनरेट करता है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ही जनरेट करती हैं डेटा, और नेशनल प्रिजन्स इंफॉर्मेशन पोर्टल पर जो है वो ये डेटा को शेयर करती हैं. ठीक है. फिर ये एक सिक्योर नेटवर्क है, NIC,
हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एक सिक्योर नेटवर्क है, जिसको सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो प्रिजन्स हैं वो ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकती हैं, और जो है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इसको लिंक किया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ई प्रिजन्स। सो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एडवाइज्ड ऑल द स्टेट्स टू अपडेट द recent photographs of the prisoners who have been released on either payroll, furlough, or premature release on the e-prisons portal, and further to the interoperable criminal justice system. So this interoperable criminal justice system is the umbrella system under which e-prisons, police related other platforms and court related other platforms are all integrated under this interoperable criminal justice system. So just imagine that this is a big folder under which there are several there are several other small folders. Okay, so the home ministry has asked the states to update this small e-prisons folder also, as well as the update this interoperable this large the folder also. Okay, so I'm just giving you an example of a folder just for you to understand that. Okay, so this e-prisons is basically a program under which we are computerizing the functioning of prisons in the country, and this has been operational in all the states and union territories, and the home ministry has already provided a financial assistance of around 100 crore rupees to all the states and union territories for the fructification of this project. And who uploads the data? The states and union territories in which the prisons are located, they maintain and update the data on this platform through the National Prisons Information Portal. So this is a secure platform, and only authorized officials of law enforcement agencies and prisons can access this data and make any changes to this data. Okay, so now let us see the next topic, which is UN fund for Afghanistan. तो अभी आपको पता है कि जब से जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है, तो अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। तो ऐसी एक सिचुएशन हो गई है कि लोकल इकोनॉमी इम्प्लोड हो जाएगी, तो उसको मद्देनज़र जो है वो यूएन ने क्या किया है, एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया है, ताकि जो कैश है वो डायरेक्टली अफ़गान्स को हम पहुंचा सकें। डोनर जो फंड्स देंगे, जो भी यूएन एक ऐसा स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाएगा, इसमें जो भी डोनर्स पैसे देंगे, इसको जो है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो है वो लोकल लोगों को जो वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो मोटिव ये है कि अफ़गान हाउस होल्ड्स जो अब आने वाले टाइम में विंटर्स आ रही हैं, तो उनको जो है बेसिक जो इनकम देने की ज़रूरत है, तो उससे लड़ने के लिए, विंटर्स से लड़ने के लिए, और जो उनकी फूड इनसिक्योरिटी की जो एक सिचुएशन आ चुकी है, उससे लड़ने के लिए कैश प्रोवाइड कराया जाएगा अफ़गान वर्कर्स को। फिर जो है अब छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और जो है वल्नरेबल और एल्डरली और डिसेबल्ड को खासकर जो है वो टेम्पररी बेसिक इनकम भी दी जाएगी। तो जो ये फ़ंड बनाया गया है, इसमें सबसे पहला डोनर बना है जर्मनी, जिसने 50 मिलियन यूरोज़ यानी कि $58 मिलियन जो है वो प्लेज किए हैं कि वो इस फंड में डालेंगे। और ज़रूरत क्या है ये फ़ंड को बनाने की, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो रही है, ऑलमोस्ट 30% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है इकोनॉमी, और रिफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन ना आ जाए और नेबरिंग कंट्रीज़ में रिफ्यूजी इन्फ्लक्स ना बढ़ जाए, इसके लिए जो है वो सारी कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया है कि लोगों को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया, तब से जो जितने भी उन अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के असेट्स थे, उन सबको उसको जो है सारी कंट्रीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि यही नहीं पता था कि गवर्नमेंट कौन सी है, ठीक है। तो अभी तक हमने लेजिटिमेसी ही नहीं दी है तालिबान गवर्नमेंट को, तो हम मतलब हु इज़ ऑपरेटिंग अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक, और उसके असेट्स का क्या मिसयूज़ ना किया ना जाए, इन सब को रोकने के लिए असेट्स को फ्रोज़ कर दिया गया था। सारी वर्ल्ड वाइड जो भी असेट्स आपके अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के थे, तो उससे क्या हुआ कि एक तरह से फाइनेंशियल क्रंच आ गया, और अफ़गानिस्तान में ये सिचुएशन जो है वो एमर्ज हुई। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इस डोनर फंड्स को आप जो है कैसे अफ़गान्स तक डायरेक्ट पहुंचाओगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि तालिबान को इसमें आप अवॉइड करो? क्या तालिबान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो? कैसे आप पहुंचाओगे अफ़गान्स को डायरेक्टली ये?
कैश, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है यूएन के लिए भी, ठीक है। तो 6 अब ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक एस्टिमेट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर $667 मिलियन की के अराउंड ज़रूरत पड़ेगी। और जो है उसमें से अब देख लो, अब जर्मनी ने तो ऑलरेडी $58 मिलियन जो है वो ऑलरेडी प्लेज कर दिए हैं। धीरे धीरे इसमें और भी कंट्रीज प्लेज करेंगी, इवन इंडिया भी प्लेज करेगा। इंडिया जो है वो यूएन के थ्रू डील करने में संकोच नहीं करेगा अफगानिस्तान में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक in English. United Nations Fund for Afghanistan. So, since the takeover of the Afghan government by Taliban forces, there is a situation of economic collapse in the country, and the local economy seems to be imploding, and that's why a crisis situation is emerging. Realizing the severity of this issue, United Nations has decided that it will set up a special trust fund through which it will seek donations from the donors. And the fund, which this special trust fund will utilize the donations to pay cash directly to Afghans through a system of by tapping these donor funds. Okay, so what has happened since the Taliban has taken over Afghanistan since August? The global economies as well as international financial institutions, they have frozen the funds of the Central Bank of Afghanistan, because there is no clarity as to what is or who is the legitimate government of Afghanistan. So as you all know that nobody has yet officially recognized the Taliban as the government of Afghanistan. That's why most of the countries and financial institutions are confused, and they have frozen the funds so that these funds do not fall into the hands of illegitimate governments or the terrorist in per se. So that's why because of freezing down these assets, a situation of economic implosion has arisen, and the United Nations has realized it, and now it will be providing cash assistance to Afghan workers, to micro enterprises, as well as to the vulnerable elderly and disabled, so that they can have some temporary basic income. Because we are also we are also seeing that winter will come in the next few months, and winter is harsh in Afghanistan, and Afghans need money in their hands for even basic purposes. So IMF has also said that Afghan economy is set to contract by up to 30% this year, and if this happens, then there could be a refugee crisis, and this may percolate to not just Turkey but Europe also. To avoid such a catastrophic situation, the UN has decided to set up this fund, and there has been an estimate by UNDP that for the first 12 months, Afghanistan would require approximately $667 million. And Germany has become the first contributor to this fund, and it has pledged almost $58 million to this particular fund. Okay, so now let us see the next topic, which is FATF. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया है। अब उसका जो आपका एक और ब्रदर है पाकिस्तान का, टर्की, उसको भी इसके अंदर डाल दिया गया है, और जॉर्डन, माली को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। तो पाकिस्तान को बहुत टाइम से ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF द्वारा, क्योंकि वो कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले पा रहा है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और तालिबान के जो UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप के अगेंस्ट कोई एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहा है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब कहा गया था कि 34 एक्शन प्लान्स आपने लेने हैं, उसमें से 30 तो वो ले चुके हैं, मतलब चाहे वो खाना पूर्ति हो या जैसे भी हो, पर 30 वो कर चुके हैं। लेकिन जो 4 कॉन्क्रीट हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं, जैसे कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, उस पर वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो पाकिस्तान को डिसाइड किया गया है कि दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। और UNSC का रेजोल्यूशन है 1373, जो कि 2001 में अपनाया गया था।
इसके अंदर काउंटर टेररिज्म मेजर जो है वो ये काउंटर टेररिज्म मेजर था, ये यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1373, उसको भी देखा गया है कि पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन को भी से भी कंप्लायंट नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो अब FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1989 में G7 समिट पेरिस में हुई थी, वहाँ पर इसको बनाया गया था। इसको ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर OECD से है, OECD में है, जो कि पेरिस में है। ठीक है, तो अब जो FATF का मेंबर कौन बन सकता है? जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मेंबर्स हैं वो इसका मेंबर बन सकती हैं FATF की। ठीक है, तो इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, तो FATF की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है आपकी प्लेनरी जो होती है वो साल में 3 बार होती है, उसमें जो है रिव्यू किया जाता है कि कोई कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में रखा जाए या निकाला जाए। ठीक है, तो अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती हैं? तो ग्रे लिस्ट तो वो कंट्रीज इस लिस्ट में वो वाली कंट्रीज को डाला जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये कंट्रीज टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेफ हेवन बन चुकी है। तो ये ग्रे लिस्ट एक तरह से वार्निंग देती है इन कंट्रीज को कि अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया, आपने ये सेट ऑफ गोल्स को पूरा नहीं किया, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जब ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे तो आप नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज की कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। ठीक है, तो अब जब ये ग्रे लिस्ट में आ जाती है कोई कंट्री, तभी जो है जो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं या जो है वो इसमें इन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी तो हमारा पैसा फंस जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यही इसी थ्रेट की वजह से ही जो है ग्रे लिस्ट की थ्रेट की ब्लैक लिस्ट की थ्रेट की वजह से ही जो है पाकिस्तान जो है सफ़र कर रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ जो हैं, बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल दिया था और वहाँ पर एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। FATF, सो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स plenary was conducted and it has decided that it will retain Pakistan in the grey list yet again. So apart from Pakistan, 3 other countries have also been added to this grey list, that is the Jordan, Mali and Turkey. Okay, so apart from Pakistan, it's another brother. Turkey has also joined this list. And why Pakistan was retained in this list? So the argument given by the FATF leadership is that Pakistan needs to demonstrate more that it has taken investigations and prosecutions against the terrorist groups and money launderers. Okay, so Pakistan is accused of harboring terrorists or UN designated terror groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda and Taliban, and it was given a target of 34 action plans, out of which it has largely addressed about 30 items, but even now 4 of the most important action plans have not been undertaken by Pakistan. So that's why FATF has decided that because this country has not yet taken the complete action, so it will have to be FATF will have to retain this country in the grey list. So Pakistan is accused of violating this UNSC resolution 1373, which is a counter-terrorism measure, and it lists organizations or terrorist organizations which of these organizations cannot be supported by any country, and if any country provides any direct or indirect support to these organizations which are specified in this resolution, then that particular country is entitled to be blacklisted or sanctioned by the international community. Okay, so this Financial Action Task Force is an intergovernmental body which was established in 1989 by the G7 countries in Paris, and it is an effective organization. It takes legal, regulatory and operational measures to combat money laundering and terrorist financing. Okay, so all these activities threaten the international financial system. That's why FATF handles them at this level. So its secretariat is located at the headquarters of OECD, that is in Paris, and every country which is a member of United Nations General Assembly is eligible to become a member of FATF also. So similarly, India is also one of the members of FATF,
and its plenary, which is the decision making body of FATF, it meets thrice a year, and on every occasion it decides if a country has to be removed or it has to be placed in either the gray list or the blacklist. So what is a gray list? So gray list is basically serving you as a warning. So it is serving you a warning that you are accused of providing safe havens to the terrorist groups or groups which are involved in money laundering. So if you do not take action against them, or you do not perform any task which this FATF asks them to, then they risk themselves to be moved to this blacklist. Under the blacklist, there will be sanctions, and these countries will be known as the non-cooperative countries or territories, and they will be labeled as the supporters of terrorists and the money launderers. Okay, so now let us see the next topic, which is specialty steel. तो आपका जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने PLI स्कीम जो है वो स्पेशलिटी स्टील को भी एक्सटेंड कर दी है. तो ये स्पेशलिटी स्टील क्या होता है? जो आपका नॉर्मल वैल्यू एडिड स्टील होता है, वो जो आपका नॉर्मल स्टील होता है, फिनिश स्टील, उसके अंदर कोटिंग, प्लेटिंग या हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हाई वैल्यू एडिड स्टील बना दिया जाता है, ताकि उस हाई वैल्यू एडिड स्टील का जो आपके बड़े स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस हम कर सकें, जैसे कि डिफेंस में, स्पेस में, पावर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या किसी भी कैपिटल गुड्स में जो हम उसका यूज़ कर सकें. ठीक है, तो 5 कैटेगरीज के स्पेशलिटी स्टील को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर अगर कोई जो है इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेगा और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो उसको जो है आपको इंसेंटिव्स मिल सकेंगे, जैसे कि है ये कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ या वेयर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशलिटी रेल्स. तो इन सब में जो आपका जो भी कंपनी जो है या इंडस्ट्री जो आपकी स्पेशलिटी स्टील बनाएगी, तो उनको जो है वो बेनिफिट्स इसके मिलेंगे. ठीक है, तो स्मॉल और जो बिग प्लेयर्स दोनों के लिए बेनिफिट्स जो है वो इसमें दिए जाएंगे. ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और जो स्मॉलर प्लेयर्स, जो सेकेंडरी स्टील प्लेयर्स हैं, उन दोनों को ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो कहा जा रहा है कि अगर ये स्कीम जो है सक्सेसफुल हुई, तो 42 मिलियन टन्स तक का जो है स्पेशलिटी स्टील की प्रोडक्शन होगी इंडिया में 2026-27 तक, और 2.5 लाख करोड़ तक का जो है हम स्टील बना सकेंगे, स्पेशलिटी स्टील. ठीक है, फिर अब इसमें कहा जा रहा है कि हम 5.5 मिलियन टन्स का जो है वो स्टील जो है एक्सपोर्ट करेंगे, स्पेशलिटी स्टील, जिससे हम 33,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स जो है वो हम अर्न करने वाले हैं. ठीक है, अगर ये ऑफकोर्स ये स्कीम जो है वो सफल रही तो. So now let us see this topic in English. Specialty steel. So you already know about PLI scheme. We have discussed it ample times in the last 1 year. So this PLI scheme has been extended to specialty steel also. So this for those who don't know about PLI scheme, so it is basically a production linked scheme under which you are giving targets to the manufacturers, that if you produce this and this much amount of rather there is no specified target, so it is just a value it is giving you targets that if you have produced 100 kilos of steel today, this year, and now next year if you produce 200 kgs of steel, then for this addition of 100 in this addition of 100 kgs or 100 rupees, let's say in 100 rupees, then we will be giving you incentives worth rupees 6 rupees or 7 rupees. Okay, so this is basically a percentage linked or a special incentive scheme which incentivizes greater production. Okay, so or there is also another component in which if you invest in manufacturing plants, so if you are investing in manufacturing plants, it also means that you are going to expand your manufacturing capacity. Okay, so nobody invests in new manufacturing plants without any reason. Okay, so the basic aim of this scheme is to increase manufacturing activity in these particular sectors. So this scheme has also been extended to the specialty steel sector now. So this specialty steel is a high value added steel which is prepared by coating, plating, or giving heat treatment to to a normal finished steel,
so that it becomes a high value added steel and it can be used in strategic applications like defense, space, power, etc. So these five category of specialty steel have been identified, and in which in these categories of steel, PLI scheme benefits would be applicable. So the impact of the scheme is is that if this scheme turns to be successful, then India would be able to produce 42 million tons of this specialty steel by the year of 2026-27. So it will also ensure that we will be producing 2.5 lakh crore worth of specialty steel by this during this period, and we would be earning we would be exporting 5.5 million tons of specialty steel against the current level of 1.7 million tons, and this would fetch us about 33,000 crore rupees as extra forex reserves, okay, or foreign exchange. So now let us see the next topic, which is Saksham Centers. तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोग्राम के ही का एक एज अ पार्ट जो है 152 सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी जो है, जिसको हम सक्षम सेंटर्स भी कहते हैं, वो खोले गए हैं 77 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 स्टेट्स में. तो अब ये सेंटर क्या है? जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी की. ठीक है, अब ये सेंटर्स के अंदर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग और डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों की जाएंगी एसएचजी के मेंबर्स को और रूरल पुअर दोनों के लिए. ठीक है, इस सेंटर्स को कौन मैनेज करेगा? एसएचजी नेटवर्क्स ही मैनेज करेंगे इसको, और इसमें जो रिसोर्स पर्सनस होंगे जिनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनस कहेंगे, उनकी 6 डे ट्रेनिंग की करवाई जाएगी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा, और उनको वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में किट्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो समझ सकें, और जो है मटेरियल जो उनको आगे देना है, जो प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, वो भी उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में होगा. ठीक है, एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है सक्षम, ताकि नज़र रखी जा सके कि कितनी ज़्यादा लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हो चुका है फाइनेंशियल सर्विसेज का हमारी जो है विलेजेस में या एसएचजीज में. तो ये उसके लिए एक स्पेशल ऐप भी बनाई गई है, और इसका प्रोग्राम का इम्पैक्ट कैसा जा रहा है इसको भी जो है वो इसके थ्रू ही मेजर किया जाएगा इस मोबाइल ऐप के थ्रू. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सक्षम सेंटर्स. सो एज पार्ट ऑफ दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव, total of 152 center for financial literacy and service delivery, that is the Saksham centers, have been launched across 77 districts of 13 states. So these centers will basically serve as one-stop solution or single window system for basic financial needs of SHG households in rural areas. So these centers will provide financial literacy and facilitate delivery of financial services to the SHG members as well as to the rural poor. So these centers will be managed by SHG network only, and the people who would be the resource persons in this centers, they will be known as the financial literacy community resource persons, which will be providing the financial literacy training, and they would be giving the financial services delivery to the rural poor as well as the SHG members. These resource persons will be provided training by the rural self-employment training institutes, and for that they will be given vernacular toolkits, vernacular language toolkits, so for them to better understand this financial services. And in further, they would also be able to utilize this toolkits or language toolkits to impart training to the rural poor also. Okay, so another mobile application has also been, and a mobile as well as web-based application known as Saksham has also been developed so as to keep an eye over the penetration of various financial services at the village level and SHG level, and this application will also measure the impact of this program. So now let us see the next topic, which is bunny buffalo. तो सबसे पहला इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है वो पैदा हुआ काफ जो है बफलो का, बन्नी बफलो का काफ जो है वो अब जो है वो पैदा हुआ है. ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे पहला OPU IVF वर्क के थ्रू पैदा किया गया ये एक काफ है बन्नी बफलो का. तो बन्नी जो है वो आपकी एक डोमेस्टिक या फिर इंडिजिनस आपकी बफलो है,
जिसको आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने इसके बारे में बात भी की थी जब कच्छ रीजन में उनकी विजिट हुई थी। तो उससे नेक्स्ट दिन ही जो है ओवम को पिकअप किया गया और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इस काफ को जो है वो जन्म दिया गया। ठीक है, तो वो अब रिसेंटली पैदा हुआ है वो अभी। So now let us see this topic in English. So first IVF calf of a buffalo breed, namely Bunny, has taken birth just recently. So it is the first OPU IVF calf which has taken birth in the country. So this Bunny breed is an indigenous breed of buffaloes. This calf this calf has been breded using this in vitro fertilization technique. And what happened during this how it this procedure was done. So PM Modi made a visit to the Kutch region on the 15th of December last year, and on the next day ovum was picked up of a bunny buffalo, and using in vitro fertilization technique of another bunny buffalo, a male buffalo, this calf was planned, and the first calf of this bunny breed has taken birth just few days ago. Okay, so now let us see the next topic, which is melioidosis. तो ये एक आपकी रेयर डिसीज़ है जो कि एक अरोमा थेरेपी स्प्रे था, जो कि मेड इन इंडिया अरोमा थेरेपी स्प्रे, जो कि वॉलमार्ट के एक शोरूम में रखा गया था यूएस में, और उस अरोमा थेरेपी स्प्रे से कहा गया है कि उसकी वजह से ये जो भी नाम है इसका, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा नाम है, मेलियोइडोसिस की जो एक रियर डिसीज़ है, इसकी वजह से ये डिसीज़ वहाँ पर एक पर्सन को जॉर्जिया में हुई है। ठीक है, और अदर बहुत सारे लोगों को हो चुकी है, 2-3 लोग और भी हुए इससे इन्फेक्ट हुए। तो अब कहा जाता है कि एक बुरखोल्डेरिया सूडोमेली, तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिसीज़ के लिए। ठीक है, मेलियोडोसिस। तो ये डेडली तो नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको कोई भी सिम्टम नहीं आता है, बट कुछ लोगों को जो है इसका सिम्टम जो है वो उनके लिए सिवियर हो सकता है और वो उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिसीज़ जो है इसको हम विटमोर्स डिसीज़ भी कहते हैं, और ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को हो सकती है। मोस्टली ये जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही होती है, जहाँ पर वाटर और सॉइल में ये बैक्टीरिया होता है, बुरखोल्डेरिया सूडोमेलाई। ठीक है, तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स में ट्रांसमिट होती है डिसीज़ जब कभी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए कंटेमिनेटेड सोर्स के थ्रू। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है उनको कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन जो है कई लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर, स्किन चेंजेस, निमोनिया जैसे। लेकिन जब सिवियर कंडीशन होती है तब उसमें ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है, और बहुत लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, so now let us see this topic in English, melioidosis. So recently an aromatherapy spray was pulled off by the Walmart because it was found to be involved in perpetrating melioidosis disease. So according to the US Centers of Disease, a bacteria named as Burkholderia pseudomallei is responsible for this rare but deadly disease called melioidosis. So this disease is also called Whitmore's disease, and it can infect both humans as well as animals. So it is generally a disease of tropical climates, and this bacteria is found in contaminated water and soil. It can infect both humans and animals if they come in direct contact with this contaminated source. So in most of the people who get infected with this bacteria, they experience no symptoms, but those who experience symptoms, they have either the mild symptoms like fever, skin changes, etc. But those who get the severe symptoms, they will see symptoms like inflammation of the brain, joints, and when the low blood pressure or dangerously low blood pressure goes, then it may prove to be fatal. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.